Hello everyone, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. A very good morning to each and everyone present here. Good morning guys, good morning. And first of all, I wish all the best to all the SBI PO aspirant those who have their examination today. ठीक है? तो जिन लोगों का भी examination है, तो I wish them all the best. Quickly let me know guys if I'm audible to you all. Is the session live? Can we start this session? Hmm. Okay. So I think the session is streaming. We can start this session. ठीक है? हम लोग start कर सकते हैं session को. Okay. So I think the session is streaming. We can. Okay. So good morning, Lakya. Good morning, everyone. Good to see you all back. Okay. So see from this week today, SBIPO examination will be over. Now complete focus should be on 2023 because 2022 की जो भी vacancies थी सारी over हो चुकी है. Today is the last examination. Okay. Now you have your interviews. Those who have their IBPS PO and those who will be having their SBIPO interviews. Okay. But now it should be like complete attention should be only towards 2023 examination. Whatever we can do, we will do to crack this year. Okay, to at least take one seat this year anyhow. Okay, तो चलिए start करते हैं आज का session. And today's article again it is going to be very very important. You will get very good idioms, very good vocabs. Okay, everything. So let's start today's session. So, if I talk about Saturday's homework, it was done by updated GS and current affairs, Abdul Shafiq, Arju Arvind, Sanjeev Kumar, Tira Goraya, Krishna Mamsi, Regal Star, Mr. Innocent, Mitra Raj, Geeta Singh, Ujala, Swastik Singh, Ruchita, Sonali. Only these people did the homework, but from tomorrow I want more names in this homework session. Okay. So guys, quickly, those who are here for the first time, quickly like this session, share this session with others and subscribe to our YT channel. एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आई एम परफेक्टली फाइन. व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके, आई होप यू ऑल आर गुड. सो यू नो दीज बैचेस आर ऑलरेडी लाइव बिकॉज अभी सबसे पहला हमारा जो वैकेंसीज है 2023 का दैट इज LIC AO एंड LIC ADO. So we have these batches also up, so you can join these batches using my code SABA, so you will get a good discount. Okay, so LIC ADO batch, LIC AO batch, both the batches are there, so you can join these batches using my code SABA. तो आप मेरा कोड यूज करके ये बैचेस को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Today's quote is: every sunset is an opportunity to reset. Every sunrise begins with new eyes. It means every day. अब जैसे आपका जो 2022 गया है, so that is your sunset. Now that has come with opportunity. Okay, now especially I'm talking about those who targeted 2020 examination and they couldn't make it due to certain reason. अब आपको एटलीस्ट यू नो योर वर्थ. अगर आपका एक मार्क्स किसी सब्जेक्ट से सिलेक्शन रुका है, सो दिस टाइम यू शुड हैव मोर डेडिकेशन. चलो जब मैं इतना कर सकता हूँ तो ऑफकोर्स आई कैन ब्रिंग वन मोर मार्क्स. ओके, तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू क्वालिफाई. So every sunset, every last year, every last day, that is just an opportunity to reset yourself. You can reset everything and you can start new beginning. Okay, and sunrise comes with new hope, new beginning, new opportunities and everything. So please take it as the sunrise of 2023 and start your preparation with full dedication from day one itself. मतलब हर दिन वैसी प्रिपरेशन करिए जैसे कि आपकी 2 दिन के बाद एग्जाम है. ठीक है, जब आप उस लेवल वाली प्रिपरेशन करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी फोर्स एनीथिंग दैट कैन डिटर यू टू टेक सिलेक्शन दिस ईयर. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट ग्लिम्स ऑफ टुडेज सेशन, आज क्या करने वाले हैं? सो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन सेशन. ठीक है, then we have vocabs of today's session. Very important, very good words you are going to learn in today's session. ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so that share this session so that maximum can join, because vocabs काफी अच्छे हैं, idioms काफी अच्छे हैं. So after many days we are going to get good numbers of idioms in one article. एक ही article में आपको काफी सारे अच्छे idioms मिल जाएंगे. Okay, phrasal verbs also we have. So in short I can say that today we are going to have complete article जहाँ पे हर component होगा इस editorial का. Okay, then we have complete analysis of today's article. Article itself is important. बहुत सारे लोग थे इसके victim भी होंगे. Grammar learning, tone objective, practice exercise, that is your homework. Everything we are going to start. Grammar learning is also going to be extremely good today. ये भी अच्छी होने वाली है. ठीक है. Now let me know if everyone is ready. Yes, you will achieve everything. My wishes are there with you, with everyone.
So now guys, let me know if you all are ready for this revision session. क्या सभी लोग ready है revision session के लिए? I want maximum reply, maximum participation. Okay, let's start. Quickly match these terms with their corresponding synonyms or antonyms. Four, 5, 2, 7, 1, 6, 3. I think Arju and Jia, you are correct. Yes, correct, Mitra Raj. Very good. Geeta, very good. Innocent, good. Good morning, Arju. Good morning, everyone. Yes, I think maximum are correct. Yes. So emblematic, as you know, emblem से ही आप इसे निकाल सकते हैं. Emblem basically is what? It is a symbol of something. ठीक है. Emblem किसे कहते हैं? National emblem, you know, symbol. So emblematic means किसी भी चीज का symbol, representative of something, symbolic. Okay, so that is called emblematic, symbolic. Okay. So A will be matched with fourth, and it is what? It is synonym. It is a pair of synonym. Now, enervating and invigorating, are these two synonyms? Tell me. Enervate, you know, enfeeble something. किसी भी चीज को weak करना. To enfeeble something, to weaken something, that is called enervate. Now tell me, enervating and invigorating, are these two synonyms? No, these are antonyms. Not synonym in the sense, these are antonyms. Invigorate basically we call to energize. Invigorate basically we call to energize, to strengthen something. Okay, so this is what it is, the pair of antonym, not synonym. Yes, debilitating is the synonym of enervating. So enfeeble, weaken, debilitate, all these are synonyms, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना. But invigorate basically we call to energize something and strengthen something. That is the meaning of invigorating. Okay, so B will be matched with fifth. Clear, everyone? So this is a pair of antonym, not synonym. Remember this thing, because invigorate is a very good term. Invigorate and innervate both are very good terms जो generally आपके एग्जाम में पूछा जाता है. So this is a pair of antonym. Remember this thing. Okay, shackle basically we call to restrain. Okay, constrain, all these are the synonyms. Chain, किसी भी चीज को कंट्रोल में रखना. ठीक है, चेन करके रखना, लॉक करके रखना. सो दैट इज व्हाट शैकल मींस. सो इट सी विल बी मैच्ड विद टू. एंड अनशैकल बेसिकली वी कॉल टू लिबरेट. अगर किसी चीज को अनशैकल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लिबरेट. आई टोल्ड यू वन मोर वर्ड दैट वी कॉल टू मैनकल. मैनकल बेसिकली हैंडकफ को कहा जाता है. So, अगर किसी के हाथ में भी आप हैंडकफ लगा रहे, इट मींस यू आर restraining दैट पर्सन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शैकल. ओके, so it will be matched with 2. Then sanctity, you know, holiness, piousness. Sanctity basically we call to holiness and piousness of something. That is called sanctity. So D will be matched with 7th. Creed we call to faith, religion. That is called creed. Caste and creed. इसको हमेशा याद रखिएगा तो साथ में you will remember. Okay. Emancipate is what? Liberate. Yes. Emancipate is liberate. That is the antonym of the word shackle. Correct. So E will be matched with first. Fraternity, as you know, kinship, brotherhood. So that is called fraternity. It is a French word. फ्रैटरी का मतलब भी मैंने बताया था, ब्रदर से रिलेटेड है, भाईचारा जिसको कहते हैं. सो इट इज ऑलरेडी मैच्ड. एंड सेक्टेरियन बेसिकली वी कॉल टू नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो डिवाइड कर दे किसी भी चीज को सेक्ट में. सो दैट इज कॉल्ड सेक्टेरियन. ओके, सो जी विल बी मैच विथ थर्ड. So I think everyone is correct. 4, 5, 2, 7, 1, 6, 3 is the correct answer. Absolutely correct. Fellowship, kinship, yes, correct. So these are the synonyms. Okay. So yes, emancipate is correct. Good. So I hope these vocabs are clear. Now let us start vocabs of today's session. So today we have just one slide for revision. Now we will start today's session. Okay. Now I want full concentration here. Try to repeat each and every word so that you memorize them. Okay. First word is saga. Saga, you know, we call to tale, story. That is called saga. Okay. Saga basically we call. But saga also, there is a very good word that we call rigmarole. So rigmarole story, basically rigmarole we call to a series of incidents. मतलब बहुत सारे जो incidents हो रहे हैं and they form a story, so that is called saga. Okay, so saga refers to story also, tale also, but saga also refers to rigmarole, a long series of incidents, so that is also called saga. Okay, so it is a noun. Remember this thing. It is what? It is a noun.
Now, next word we have is infuse. Infuse basically we call to fill something. Infuse patriotism in yourself. Okay, so what we say infuse means induce, fill, pervade, suffuse. All these are the synonyms of the word infuse. It is a verb. Infuse also we use for coffee and all ना infuse उसके लिए भी use करते हैं. Okay, so basically it means fill, pervade, suffuse. All these are the synonyms. मतलब अपने अंदर किसी भी चीज को infusing. Patriotism in oneself, इसको आप याद रखिए कि अपने अंदर patriotism की feeling fill करना, so that is called infusing. Okay, next word we have is gyration. It is a good word. Now gyrations is what? It is a noun. Gyration, इट मीन्स स्पिनिंग, वर्लिंग, रोटेशन, मतलब कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही हो. ओके, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ड गायरेशन इज. इट मीन्स स्पिनिंग, वर्लिंग, रोटेशन, रेवोल्यूशन. ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड. ओके, नेक्स्ट, राउट. No, it is not route, guys. It is route. Route can be used as noun also. It can be used as a verb. Okay. So it is a noun also. It is a verb also. इसको route से confuse मत होइएगा. It is route, R-O-U-T. So route basically we call to defeat or retreat. वापस कहीं से. Basically it is used for soldiers retreating from battlefield. Wish you all the best, guys. Those who are going to write SBI PO mains examination, I wish you all the very best. मैंने कल भी मतलब मैसेज किया था टेलीग्राम में कि प्लीज गो विदाउट एनी प्रेशर, कि आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेंस लिखने की. ठीक है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट. दैट इज द ओनली थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड. ओके, so my wishes are there, and I think you should leave the session right now, Shravan. You can watch the later. You can watch the editorial later. रात में आप देख सकते हैं. But right now you should relax and you should focus on your examination because 3 hours 30 minutes का आपका पेपर होने वाला है. So don't exhaust yourself. Okay. So wish you all the best. Leave the session. Get ready for your examination hall. Have breakfast and everything. Okay. Don't go empty stomach. Have light breakfast and then leave. Okay. So route basically we call to. Acha, Arju also has. So why you guys are here, I don't know. If you have your SBIPO examination, you know editorial you can watch at the evening also. See, whenever you have your examination, I won't suggest you कि उस दिन तो editorial मत देखिए. Okay. So guys, please leave this session. Go have your breakfast. Get ready for your examination. Okay. I won't suggest कि कब से exam है आप लोगों का. Okay. So don't exert yourself in the morning. चलिए, route basically we call to defeat or retreat. Okay. The next word we have is leverage. So leverage, as you know, use something to maximum advantage. ये हमने पहले भी देखा था. लेवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज को मैक्सिमम एडवांटेज से यूज करना. ओके, बेसिकली ये शेयर वगैरह के लिए यूज होता है कि आप कम प्रॉफिट में पैसे जो है, मतलब लेवरेज यू नो कि किसी से भी लोन वगैरह आप लेते हैं बट यू वांट टू टेक मैक्सिमम रिटर्न ऑफ दैट थिंग, सो दैट इज कॉल्ड लेवरेज. इट कैन बी अ वर्ब ऑल्सो. It is basically a verb. Okay, so use something, basically it is used for using debt to maximum advantage. कि आपने मेरे से पैसे लिए हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है, now you want to get the selection. Okay, so it means you are using that debt to your maximum advantage. That is the sense you are getting. Okay, leverage. Next, appreciably. Appreciably basically we call to significantly, considerably, noticeably. ठीक है, so it is what? It is an adverb. Appreciably is an adverb, so that means significantly, considerably, noticeably. All these are the synonyms. So one more thing I would suggest, please Arju, Shravan, those who are here, I hope that you have my contact number after coming from the examination hall. Okay, so do give me review because we will be joining for that exam analysis, so we want your review. Okay, so I hope that you guys will give us good review and try to connect immediately after the examination. Okay, for exam analysis, for review. So those who are going to write, I will text my number in the Telegram group also. So please do give your exam analysis and review. Okay, for review for exam analysis. Okay, I think they have left. Anyways, guys, are these vocabs clear to you? Appreciably means significantly. देखिए appreciation आपको पता है, appreciate का मतलब होता है praise someone. Okay, but appreciably we call to significantly, considerably, noticeably. All these are the synonyms of the word appreciably. Okay, leverage we call to use something to maximum advantage. Route is a good word that we call defeat, retreat. Gyration, spinning, whirling, rotation, revolution. All these are the synonyms. Okay, infuse, fill something, pervade, suffuse, and saga, as you know, a series of a long series of incidents. Okay. Now, next word we have is nay. It is a very good word.
ने बेसिकली वी यूज टू एम्फसाइज समथिंग, ओके। ये क्या है, इसको किसी भी चीज को, इट इज अ फ्रेज, ओके, वी यूज दिस फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग, दैट वी से इन फैक्ट, more than that, it functions as an adverb. Now you will ask how to use this. If I say you should watch editorial daily, nay join it live, means मैं आपको एक बार बोल रही हूँ कि आपको एडिटोरियल डेली देखना चाहिए, ठीक है, बट नाउ आई एम emphasizing try to join it live, no in fact you should join it live. So that is what nay basically we say कि I'm emphasizing on joining live editorial daily, okay. So it means in fact, it means more than that, okay. So that is the meaning of the word nay. Next, मैलाफाइड, देखिए MALA वर्ड कहीं पर भी आ जाए माल, ओके, सो दैट इज अ नेगेटिव, इट कैन बी अ रूट फॉर यू, सॉरी. सो मैल वर्ड बेसिकली वी यूज फॉर नेगेटिव, ओके, जैसे माल न्यूट्रिशन यूज से, ठीक है, मैलेशियस यूज से, ओके. सो देर आर सो मेनी वर्ड जहां पर भी MAL लग जाएगा, दैट इज बैड, यस. सो मैलाफाइड बेसिकली वी से कैरीड आउट इन बैड फेथ और विथ इंटेंट टू डिसीव, ओके. तो कोई भी चीज जो बैड फेथ के साथ आप एग्जीक्यूट करते हैं, यू हैव दैट intention to cheat someone, that is called malafide. Yes, malfunction, malafide, malicious, malnutrition, so many words we have. Okay, malady itself is a word. MALADY, malady itself is a word. So yes, mal बस हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी आता है तो ये it is bad, ये bad word होता है, okay. Yes. So malafide is a good term you got. Malafide basically we call to something that is MEL, Mr. Innocent. Okay. Do root में एक alphabet change करेंगे, the meaning will be changed. So it is melody, ME. It is not malady. So malady is different. Melody is different. Melody, you know, sweet. Okay. Melodious sound we say. Okay. So that is melody, sweet. So malafide basically we call to carried out in bad faith or with intent to deceive. That is called malafide. Next. Chary, again a very good word. Chary basically we call to vary. Vary देखिए हमने बहुत बार देखा. We have seen WARY, vary word a number of times. Vary we call to cautious, circumspect. Okay, it means careful. Be very careful. Now vary, chary, these both are synonyms and rhyming words. Vary and chary, vary and chary. तो vary आपको पता है, that is cautious, circumspect, careful. Okay, so these are the synonyms. Now what do you mean by the word VARY, vary? This is also vary, no? What does it mean? See, it is a noun. Cherry, vary, these are noun. Whereas VARY, vary, is an adjective. It can be a verb, varied, okay? So it is adjective. Vary basically we call to, it is a verb basically. Differ. Exact meaning is differ because it is a verb. Variation is a noun, okay? So that is different. But vary is a verb that means differ. Okay, so remember the difference between VARY and WARY. So WARY we call to cautious, careful, chary. Okay, but VARY, vary, is verb that means differ. Okay, now contagion you all know, ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे तो यही सारे वर्ड ही चल रहे थे, contamination, infection, all these things. Okay, so yes, contagion basically we call to contamination and infection. Contamination का दूसरा word है, it is a noun. Okay, ION किसी भी word के लास्ट में आएगा, it is a noun, remember that thing. Okay, नेक्स्ट, अले, ये तो आपको पता है, अले इज अ वेरी कॉमन टर्म जो हर जगह आएगा. अले बेसिकली वी कॉल टू रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज. अले फियर, इसको ऐसे याद रखिए, अलेइंग फियर, इट मींस रिड्यूसिंग फियर. ओके, सो अले फियर, इसको पेयर में वो क्या याद रखेंगे, हमेशा मीनिंग याद रहेगी. सो ALLAY, अले वी कॉल टू रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज. ये बेसिकली किसी भी डेंजर वगैरह को डिक्रीज करने के लिए वी यूज दिस टर्म अले. ओके, सो अले मीन्स allay fear, remember in this way, so it means reduce fear. ALLAY, allay. Okay, now attending editorial session will allay your examination fear. Okay, so अगर आप daily editorial session attend करते हो तो of course it will reduce your examination pressure, examination fear, all these things, especially of comprehension. Okay, so allay is what? It is a verb. It is a verb. So reduce, it is ALLAY, allay, and that is ALLEY is a noun. Okay. So remember these differences, guys. ALLAY, allay is what? It is a verb that is reduce, diminish, decrease. All these are the synonyms. Okay. Next word we have is downplay. Downplay means it is also a verb.
It can be used as a noun also, but it is basically a verb. Okay. Downplay we call to make appear less important than it really is. Means something is very, very important, but you are not considering it important. Okay. Do not downplay this editorial session. Okay. So downplay means do not underestimate. Downplay basically we can say underestimate, make less important than it really is. Simple, you can say underestimate. Okay. Do not downplay women. Okay. Never downplay women in your life. Okay. Next, repose. Repose can be a noun also, it can be a verb also. So repose basically we call to rest, inactivity, relaxation. Okay, there is one more word that is called juxtapose. Juxtapose basically we call to place side by side. Place side by side, that is called juxtapose. ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है. Women are very powerful. Okay, yes. And repose basically as a noun, it means that state of rest, state of relaxation, state of inactivity. So that is called repose. And as a verb, it means lie. Lie. Okay, as a verb, it means lie. That is called repose. इसका मतलब होता है repose. The next word we have is egregious. Egregious basically, something that is very bad. Egregious means very, very, very bad. Okay. So shocking, appalling, horrifying, awful, extremely bad. That is called egregious. Egregious we also use for notorious. Okay. A person who is known for bad things. So egregious, notorious, all these can be the synonyms. That's something that is very, very bad, awful. Okay. Awesome, extremely good, awful, extremely bad. Okay. Appalling, horrifying, shocking, all these are the synonyms. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रबिश. रबिश आप सबको पता होगा एज अ नाउन. यस, रबिश यू नो एज अ नाउन. ओके, बट रबिश एज अ वर्ब इट मीन्स, देखिए एज अ नाउन यू ऑल नो रबिश का मतलब गार्बेज. ओके, डोंट टॉक दिस रबिश, डोंट टॉक दिस नॉनसेंस. सो दैट इज व्हाट इट इज अ नाउन. Rubbish can be used as a verb also. Rubbish as a verb means criticize or censure. Censure आपको पता है किसी को भी condemn करना, criticize करना. Okay, so that talking rubbish about something, simple. So rubbish in itself we call to criticize. Sorry, yes, what we say, nonsense, disgusting. So talking rubbish about something, that is used as the verb. Okay, it means criticize someone, censure someone, condemn someone. So that is the meaning of rubbish as a verb. Egregious is an adjective. ये मैंने बताया था बहुत बार, किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए तो दैट इज एन एडजेक्टिव. ओके, रिपोज कैन बी अ नाउन आल्सो, कैन बी अ वर्ब आल्सो. हाँ, vituperate, yes, vituperative also we say. Conglomerate. Conglomerate, a large corporation. Amalgamation, जब किसी भी जैसे conglomerate of Tata, ठीक है, तो जिनके अंडर में बहुत सारे जो enterprises होते हैं, बहुत सारे business entities होते हैं, so that is called conglomerate. It means a large corporation that comprises so many small corporations. मतलब not small, बहुत सारे जिसके अंडर में corporations आ जाते हैं, बहुत सारे enterprises आ जाते हैं, that is called conglomerate. Okay, conglomeration आपको याद रखिएगा, that is group of companies के लिए we use the word conglomeration. Okay, चलिए, so many vocabs we saw. Now we have good usages of idioms and phrases. देखिए आजकल अगर आपको editorial में idioms मिल जाए ना, so that day is very good. Okay, मैं तो सुबह ही सुबह खुश हो जाती हूँ when I get so many idioms. So first is cast the spotlight. Cast the spotlight, we say to attract the attention. But which attention? Negative attention. Cast the spotlight often we use for attract the attention of something bad. Okay. So किसी भी चीज, किसी भी गलत चीजों का attention attract करना. So it means cast the spotlight on something. Cast the spotlight on prevailing corruption. Okay. So it means you want to attract the attention of everyone towards prevailing corruption. तो ये basically किसी भी गलत चीज की तरफ, खराब चीज की तरफ आप जो सबका attention attract करते हैं, that is called cast the spotlight. Okay. Next. In the wake of means aftermath. Okay. In the consequence of something. तो किसी भी चीज के consequence के लिए, aftermath के लिए we use this term in the wake of. Aftermath, in the consequence of, these both are synonyms. Okay. Next. Clean the air. Clean the air we call to diffuse an angry or tense situation by frank discussion. मतलब कोई भी जो है टेंस सिचुएशन है, यू आर ट्राइंग टू मेक इट, यू आर ट्राइंग टू पैसिफाई दैट सिचुएशन बाय ओपन डिस्कशन. ओके,
Now you all are very very apprehensive regarding 2022 2023 examinations. Now if we clean the air, we being mentors, we being your facilitators, if we clean the air, so it means we are trying to diffuse that tense situation by frank discussion that no, you need not worry, we will have multiple vacancies, so of course you can work hard and you can take a selection. Okay, so that is what cleaning the air means, to make peace or to pacify someone. ठीक है, किसी को शांत करा देना, that is the meaning you are getting. Next we have in the best light. In the best light, it means in a way that makes someone or something appear in the best way, in the most ideal or favorable manner. In the best light means in the most ideal or favorable manner, that is called in the best light. Clear everyone? So we got 4 idioms. Okay, मुझे लगता है इस पूरे साल में 2023 के beginning से अभी तक में we have got 4 idioms in just this is the first article where we got 4 idioms in one article itself. किसी और आर्टिकल से नहीं लिया, आज ही के आर्टिकल में आपको सारे आर्टिकल ये सारे idioms मिलेंगे. Any doubt, any confusion? Are these vocabs clear? In the wake of aftermath, clean the air means pacify tense situation. Okay, cast spotlight means attract the attention of something bad. In the best light means in most favorable or ideal manner. Okay, any idea what this article is going to be about? Guess करिए, लिखते जाइए किस चीज के बारे में आर्टिकल होगा. Drag down means bring something to a lower level or standard. किसी भी चीज को drag down मतलब नीचे खींचना, मतलब you are bringing it to a lower level or lower standard, that is called drag down. Okay. Make someone feel weak or oppressed. आप किसी को कमजोर बना रहे हैं, किसी को लो लेवल पे लेके आ रहे हैं, so that is called dragging down. Yes, अडानी जी के बारे में. Step up. Step up means come forward for a particular cause. Step up we also use for increase, rise. Okay. So step up we use for, मतलब आप कह सकते हैं दोनों एंटोनी में. It means make someone feel weak or oppressed. Step up means come forward for a particular cause, and it also means increase or rise. ठीक है, increase or rise भी इसकी मीनिंग होती है. अच्छा यहाँ पे लिखा है already. It is already mentioned. So these many, आज homework के लिए ready रहिए guys. You will get good amount of homework today. So many idioms and so many phrases. Okay. So this was all about the vocabs, idioms and phrasal verbs of today's session. And tomorrow be ready for the revision session because we saw very good vocabs, idioms and everything. Okay. So be ready for tomorrow's revision session also. Learn all these idioms because आपको पता है कल 2 स्लाइड होने वाला है. ठीक है. छा गए गुरु, कौन छा गया? idioms छा गए. अंकुश पटेल. Guys, those who are targeting 2023 examination, as I said, we have so many live sessions. Okay, so sorry, ADO session we are coming up with ADO, WO, all these batches, FCI means batches we are coming up with. But I always suggest my student that go for banking super elite because ये आपको एक value pack मिलेगा जहां पर आपको सारे के सारे क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बैंकिंग सुपर एलीट. बिकॉज अगर आप सिर्फ एक कोर्स परचेस करते हैं तो भी यू विल हैव टू बाई मॉक टेस्ट. ओके, सो इट इज बेटर टू ज्वाइन बैंकिंग सुपर एलीट. आप 12 मंथ्स की एक बार में वैलिडिटी ले लीजिए सो दैट you are able to attend all the classes and mock test, and definitely attending session will be helpful for you only. Okay, personalized banking mentorship program also we have. Those who are very very that novice in this field, जो लोग अभी just graduation करके start करना चाहते हैं प्रिपरेशन, इसे टारगेट करना चाहते हैं. So if you want कि नहीं मेरा first time में selection हो जाए and you want guidance at each and every step, then definitely you can go for banking mentorship program. यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो this course will cost you 10,999. In 10,999, you will get one-to-one mentorship also, all live classes and all mock test, all interview preparation. से किसी एक बैंक के नहीं सारे interview preparation होंगे. And this it is going to be valid till March 2024. तब तक तो आप लोगों का selection हो जाएगा, physical books and everything. Okay, so join this. Whatever things you are purchasing on Oliveboard platform, so do remember to use my code Saba for maximum discount. Additional discount के लिए do remember to use my code Saba. This is my Telegram channel, Learn English with Saba. Join this Telegram channel for updates on every session and for PDF. हर सेशन के अपडेट के लिए, PDF के लिए join this Telegram channel. Now let us start today's article. Try to read it carefully because काफी अच्छी आर्टिकल है. ठीक है. बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे होंगे. Quick reading.
अच्छा, यू वॉच्ड अ वीडियो ऑन दिस यस्टरडे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इसमें तो बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं। एक कोई भी बर्निंग टॉपिक हो ना, आप लोग मीम्स देख लीजिए, सारे टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट, आई होप एवरीवन हैज रेड इट, ओके। वार्निंग बेल्स, खतरे की घंटी बज रही है, ओके। वार्निंग बेल्स मींस बेल ऑफ वार्निंग, ओके, सिंपल, खतरे की घंटी। ऑन द अडानी सागा, ओके, सो दिस सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट इज हैपनिंग, यू नो, आई थिंक पिछले 25 जनवरी से ही ये चीजें स्टार्ट है, 24-25 से इट ऑल हैज स्टार्टेड, ओके। सो इट इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी अ वार्निंग बेल फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए वार्निंग बेल है, ओके। इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे आपका सेबी वगैरह हो गया, मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस, दे मस्ट फिल कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। बिकॉज जैसे ही कभी इस तरह के स्टॉक मार्केट, स्पेशली लीडिंग ग्रुप में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसमें हो जाता है, इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स में, एंड दैट इज वाई द इंटायर स्टॉक मार्केट टम्बल्स, ओके। सो दे मस्ट इन्फ्यूज, दे मस्ट फिल कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स, ओके। The latest stock market gyrations means all this upheaval, okay, एक तरह से यहाँ पे confusion की बात हो रही, commotion की बात हो रही है। gyration, you know, we use for rotation, spinning, तो spinning जब चीजें हो रही है तो मतलब उथल पुथल हो गया, you can say this is used for commotion, chaos, okay, so it is basically used for chaos and commotion, okay. Indu- Induced in large measure by stock rout in leading infrastructure and commodities intensive conglomerate the Adani Group over the last two trading sessions last week, okay, so Thursday Friday जो भी हुआ था, ठीक है, has cast the spotlight back on India's regulatory environment, okay, so this is what the meaning is. यस, क्योस। सो अभी जो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट क्योस चल रहा, अपहेवल चल रहा क्योस मार्केट में, इंड्यूस्ड इन लार्ज मेजर, एंड दैट क्योस हैज बीन इंड्यूस्ड बाय स्टॉक राउट इन लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज इंटेंसिव कॉन्ग्लोमरेट दैट इज Adani Group. You know, Adani was the third richest person of the world. Okay. And after all these things, within 2 days, he has become the seventh richest person of the world. So 4 step वो नीचे आ गए हैं, ठीक है, because of all these upheavals and ब्लू हाईलाइट, एक्चुअली इट इज फॉर द न्यूज़पेपर्स, दे प्रोवाइड द लिंक, आप उसकी स्टोरी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, सो ओके, सो दैट इज फॉर, यस, वो कॉपी पेस्ट में आ जाता है, न्यूज़पेपर से है, ओके गीता। सो मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेल यू ऑल अबाउट द डिटेल की क्या क्या अपहेवल हो रहे हैं, फिर स्टॉक राउट कैसे वो, ऑल दिस थिंग दे विल टेल यू, ओके। सो ये दिस इज लिंक. So this upheaval has been induced basically of this Adani group, okay, because it is one of the leading infrastructure and commodities intensive conglomerate. इनका जो organization है, that is one of the leading organizations, okay, okay. Over the last two trading sessions last week के जो last two trading sessions थे, okay, Thursday, Friday, okay, तो उसमें इसने काफी upheaval किया था, and this has cast the spotlight back on India's regulatory environment. Now it has cast the spotlight means what, कि मतलब कहीं ना कहीं एक टेंशन, किसी गलत नेगेटिव चीजों की तरफ, किसी प्रॉब्लम की तरफ, इट इज अट्रैक्टिंग आवर अटेंशन, ओके, एंड बेसिकली इट इज अट्रैक्टिंग अटेंशन टुवर्ड्स इंडियाज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ओके, नोटिसेबल, यस। The highly leveraged groups market troubles in the wake of a, ये जो group है, that is highly profitable group, leveraged is used as an adjective here, okay, so it is one of the profit making groups because third richest person means काफी leading businessman के ऊपर ये सारे allegations है, okay. So this person is seeing market troubles, ये जो market trouble हुआ है, it has come in the wake of means aftermath, okay. Aftermath, a US-based short sellers report alleging stock manipulation and questionable accounting practices dragged down banking shares led by SBI and even the state-owned LIC Life Insurance Corporation of India appreciably on Friday, triggering investor concern about broader financial sector stability. यहाँ से यहाँ तक का sentence है, काफी lengthy sentences है, so you need to focus, okay? So द हाईली लेवरेज ग्रुप मार्केट ट्रबल्स, ठीक है, ये जो सबसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो मार्केट ट्रबल हुआ है, दैट इज आफ्टर अ यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट, की यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट है। शॉर्ट सेलर रिपोर्ट बेसिकली वी कॉल टू, मतलब ये लोग भी स्टॉक मार्केट में ही डील करते हैं, एक्चुअली इट इज बेसिकली अ हिडनबर्ग रिपोर्ट, यू कैन से,
ठीक है, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट है, एंड एज पर दैट रिपोर्ट देयर हैज बीन एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ओके, so this short seller, this Hindenburg report has alleged that Adani Group has been involved in stock manipulation and questionable accounting practices. Besides, they are under huge debt. वो काफी debt में, because इंडिया का मैक्सिमम जो लोन है वो इन्हीं अडानी के पास ही है. ओके, so this dragged down, it reduced, dragged down means it decreased banking shares. So this allegation, of course, जब भी कोई ऐसे allegation होंगे तो सबसे पहले जो tumble होता है, that is the stock market that plunges. Okay, so dragged down banking shares led by SBI. तो जो भी SBI का बैंक शेयर था या फिर LIC के जो शेयर्स थे वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर गए appreciably. Okay, on Friday. What do you mean by the word appreciably? Quickly tell me. Does it mean in positive context? Appreciably here means what? Significantly. Okay, on Friday को काफी ज्यादा टंबल हो गए स्टॉक मार्केट, दे प्लंज्ड. ओके, ट्रिगरिंग इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर एबिलिटी. और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे, ऑफ कोर्स दे आर कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी. ओके, हाँ, कंसिडरेबली यू कैन से सिग्निफिकेंटली, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड appreciably. Correct. And while a media report citing sources said the Securities and Exchange Board of India SEBI had stepped up scrutiny of the conglomerate's transactions, there has been no official word from the market regulators. Now, there are two things. See, already there was one scrutiny, investigation. Scrutiny किसे कहा जाता है? Investigation. Already SEBI was conducting one investigation against Adani Group. ठीक है, वो already एक investigation चल रहा था. Okay, but after this allegation, SEBI has increased, stepped up means what? It has increased the investigation. उसने अपने investigation को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है. Yes, scrutiny is used as a noun ला किया. So it is investigation. So of the conglomerate transactions की जो भी इसके transaction वगैरह हुए, bank debt and all these things, so already that investigation was going on, but after this allegation, SEBI has what? It has increased the allegation, but there has been, it is just as per a source. Okay, so there has been no official word from the SEBI itself. SEBI ने कोई अपना official statement नहीं दिया, but these are the rumors, you can say. Okay, the conglomerate itself has rubbished means criticized it. Okay, द शॉर्ट सेलर्स एलिगेशन कि जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है हिडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से. सो द कॉन्ग्लोमरेट मींस अडानी ग्रुप इटसेल्फ हैज क्रिटिसाइज्ड ऑल दोस एलिगेशंस. इट हैज डिनाइड, ओके, यस, एज बीइंग बेसलेस एंड डिस्क्रेडिटेड एंड born of malified intent, okay, to hurt the group's reputation. So Mr. Adani is saying that, the group is saying that all these allegations are baseless and they do not have any credit, they are not true. Okay, and these all are just born of malified intent, bad intent to hurt the company's reputation. Okay, कि ये जानबूझ के किए गए हैं ताकि कंपनी के reputation को हट किया जा सके. And is weighing legal action means taking. Now what is the subject of this? Is quickly tell me, ये कौन legal action ले रहा है? Hindenburg report. What is the subject of this? Is malified deceptive, yes. What is the subject of this? Is conglomerate. So this conglomerate is going to take legal action against Hindenburg report. Clear everyone? So the subject of this is conglomerate, और ये conglomerate कौन है? Adani Group. Adani Group. Clear? Yes. Notwithstanding, despite how the conglomerate might move to address the concerns raised in the short sellers report, as well as those of domestic investigators who appear to have turned chary of means careful of, wary of, cautious of, the group's stocks, India's regulators including SEBI and the Reserve Bank of India have an opportunity, nay means in fact an obligation, okay, to clear the air by allaying fears of any broader systematic contagion. Now what does it mean? ठीक है, आज अडानी 460 पेज का रिप्लाई डाला है. ओके, रिप्लाई डाला कि नॉवल. नॉट विथ स्टैंडिंग, सी डिस्पाइट, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग, डिस्पाइट हाउ द कॉन्ग्लोमरेट मीन्स द अडानी ग्रुप. ठीक है, हाउ दिस ग्रुप माइट मूव टू एड्रेस, मतलब ये कैसे मूव करेगा टू एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड इन द रिपोर्ट. ओके, जो भी रिपोर्ट में कंसर्न्स है
how it is going to address all those concerns, okay, as well as those of domestic investigators. Now it has to address the concerns of domestic investigate investors also, okay. तो जो इन्वेस्टर्स है उनके भी कंसर्न्स को उनको एड्रेस करना है अडानी ग्रुप को, और जो रिपोर्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको भी एड्रेस करना है, ओके. So how it is going to do this, okay. Now who has been used for domestic investors? So these investors have become very cautious of the group stock. मतलब उनको एक खतरा लगने लगा, डर लगने लगा कि स्टॉक टम्बल तो नहीं कर जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो लोग अपना अपना जो भी शेयर होगा वो निकाल लेंगे, ओके. So this now at this moment of time, India's regulators, जो भी regulatory organization है इंडिया में, including SEBI and RBI, SEBI और RBI को include करके they have an opportunity, उनके पास एक opportunity है, nay an obligation, not an opportunity but they have an obligation, in fact उनके ऊपर ये उनकी moral duty है, it is their obligation to clear the air. Clear the air means जो भी rumor वगैरह हैं उन सारी चीजों को rumor को खत्म कर देना, okay. So to pacify the concern, okay, so to address the concern, clean the air means to address the concern by allaying fear. By allaying means by reducing fear of any broader systemic contagion, कि अब उनको आगे आना चाहिए सेबी को, आरबीआई को, and they should reduce the fear of the investors that there is no chance of infection, मतलब ये चीजें और ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगी, so that investors are also pacified, otherwise again the entire stock market will tumble, okay. Even granting that the group's stock do not have a significant presence or weight on the major benchmark stock indices, the private equity research reports have sought to downplay concerns about the banking sector's overall exposure to the group. There can be little argument that major state-owned banks and LIC are key pillars of the country's financial system. Sentences काफी lengthy हैं, so you have to focus on each and every word. Yes. Spreading of harmful ideas, effects, yes, you are correct. Contagion means infection, the same thing, okay. Make peace, yes, to address the concern, make peace, correct Naveen. Even granting that group's stock do not have, कि ये जो इनका ग्रुप है, अडानी ग्रुप का जो स्टॉक है, they do not have significant presence, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है या उनका बहुत ज्यादा वेट नहीं है on major benchmark stock indices, कि जो मेजर बेंचमार्क है स्टॉक इंडाइसेस है उस पे इनका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, ओके. एंड प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स हैव सॉट, और जो प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स है दे हैव सॉट टू डाउनप्ले मींस अंडरएस्टिमेट कंसर्न्स, लेकिन उन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर कंसर्न है उसको अंडरएस्टिमेट कर दिया है, ठीक है. ओवरऑल एक्सपोजर टू द ग्रुप, एज आई सेड मैक्सिमम, मतलब ये आपने सुना होगा शायद, देयर इज अ ह्यूमर, ये मैं अभी देखिए कुछ चीजें ना नॉलेज की आपको मिल जाती है. आई वाज वाचिंग दिस day before yesterday, I think you people might have seen this Adani came in आपकी अदालत, so this was the first time he faced any public, okay. तो कुछ दिन पहले आए थे, मैंने परसों देखा था. सो उनके ऊपर देयर वाज वन एलिगेशन ऑन अडानी कि अगर अडानी का स्टॉक मार्केट टंबल कर जाएगा, ठीक है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं तो इंडिया का सारा बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा. फिर इंडिया में सारे जो भी बैंक्स है ना, दे ऑल विल बिकम बैंकरप्ट. व्हाई? बिकॉज जितने भी बैंक है ना, मैक्सिमम लोन अडानी के पास है, ठीक है. यस. So it is what, so this is what कि they मतलब they have what the reports have underestimated concerns about the banking sector's overall exposure to the group, ठीक है. तो पूरे ग्रुप में इनका जो ओवरऑल एक्सपोजर है उसको उन्होंने अंडरस्टिमेट कर दिया है. There can be little argument that major state-owned banks and the LIC are key pillars of country's financial system. And you know कि LIC और SBI, these are pillars in the financial system, okay. हाँ, फॉरेन के भी काफी है, सो भी नहीं आते हैं, ओके. गिवन द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट रिपोस्ट मींस लाइंग इन, ओके, lay in, you can say lay, that is the form, okay, in these companies in the form of savers deposit and life insurance policies as well as taxpayer resources that have been invested to keep the PSU lenders adequately capitalized. Financial system regulators would be serving the larger public interest by preemptively communicating messages of reassurance. फिर से यहां तक का सेंटेंस, गिवन द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ओके, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा इन कंपनीज में. अब पब्लिक अपना ट्रस्ट कैसे देती है? बाय इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज, ओके. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन कंपनीज, ऑफ कोर्स यू हैव ट्रस्ट, ओके. सो दिस ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट लाइज इन दिस कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, वो डिपॉजिट करके इसमें ट्रस्ट बिल्डअप करती है. एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल्सो, LIC में क्या है, वी टेक पॉलिसीज, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट ही जाता है. as well as taxpayer resources that have been invested to keep the PSU lenders adequately
कैपिटलाइज। तो ये सारी चीजें जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है ना, तो इन्हीं चीजों से वजह से आपको पता है कि पीएसपी दीज आर लाइव। ओके, नाउ फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स, ये जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वेदर इट इज आरबीआई, सेबी, जो भी बॉडीज हैं, would be serving the larger public interest, matlab if they come forward and if they assure the public, okay, so they will be serving larger public interest by communicating messages of reassurance। मतलब ऐसे टाइम पे इन सारे कंपनीज को आना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज को आना चाहिए, एंड दे शुड एश्योर द पब्लिक नो देयर मनी इज सेफ, सो दे नीड नॉट वरी। ये एश्योरेंस चाहिए हमें आरबीआई और सेबी की तरफ से, रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से। Regulators could also enhance credibility in India as an investment destination by tightening not just the listing requirements, but more crucially, the enforcement actions in case of egregious breaches of laws. Now, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, दे कुड एनहांस क्रेडिबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। लाइक क्रेडिबिलिटी कब बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब अगर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स मोर पीपल विल बी इन्वेस्टिंग। ओके, बाय टाइटनिंग मतलब दे शुड tighten not only the listing requirements but more importantly, crucially means more importantly, the enforcement actions in case of egregious breaches of the laws। Means if any company is breaching laws, okay, if it is violating the laws, so these regulators should come up with stricter policies, उनको stricter policies लेके आना चाहिए, so that because जब stricter policies होंगी तभी जो investors हैं उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नो, इफ दीज कंपनीज वॉलेट द नॉर्म्स, ऑफ कोर्स दे विल बी पनिश्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ओके, तो ये वाली चीजें आनी चाहिए। The global debate over the credibility of credit ratings that has surfaced from time to time, whether in the wake of, like in the wake of Phil, in the wake of means aftermath, Asian financial crisis of late 1990s or the global financial crisis of 2007 to 2008 is also a concern that India's regulators need to re-engage with। मतलब यहाँ पर जो ग्लोबल डिबेट है क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, ये जो क्रेडिट रेटिंग की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, और ये इसका जो डिबेट है ये बार बार आया है। वेन एवर देर इज रिसेशन, जब भी इस तरह के बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, सो देन देर इज अ डिबेट ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कि आपने लोन लिया है, आप कैसे उसको दे रहे हैं, ऑल दीज रेटिंग्स। ओके, so this is what it is again a concern that India's regulators need to re-engage with। मतलब उनको इन सारे concerns पर भी फोकस करना होगा। At a time when India holds the G20 presidency, authorities must ensure the regulatory framework is seen in nothing less than the best light। So this is the time when India is holding G20 presidency। This time is in itself is very very crucial, and the tumbling of Adani's group, okay, उनका जो शेयर टम्बल हो रहा है, so of course it is going, it is not a favorable thing for India। Okay, so at this time all the authorities they must ensure that regulatory framework is seen in nothing less than the best light। ये अपने आप में बेस्ट वे में प्रेजेंट होनी चाहिए। there should not be any question, there should not be any concern related to this। okay, Adani says they are lying means clear everyone? Yes, that is false allegation। Now quickly tell me what is wrong here। Quickly mark what is incorrect here, this is a good question। But here you will take time to read it, quickly read it guys and let me know। Everyone is saying no error, B, no error।
Egregious means, I told, na, egregious means awful, very bad. Egregious basically we call to awful, very bad. Okay. So that is the meaning of the word egregious. Now everyone is saying no error. Some are saying B. Those who are saying B, can you tell me what is wrong? अच्छा, मैंने बोला था आई एम ऑल्सो वेरी अनप्रेडिक्टेबल मिस्टर इनोसेंट। अच्छा, तो मैंने बोला था कि अगले 5-6 दिनों तक मैं नो एरर की प्रैक्टिस कराऊंगी। सो अच्छा, आपको लगता है कि मैंने बोल दिया और मैं वही दे दूंगी सो दैट यू मार्क नो एरर? वेरी गुड कल्पेश, एक्सेलेंट। मिस्टर इनोसेंट, टुडे यू रियली साउंडेड इनोसेंट। ओके, चेरी फॉर इसीलिए बोलती हूँ कि बी वेरी वेरी, चेरी फॉर नहीं होगा, चेरी ऑफ होगा। एक्सेलेंट दिस कल्पेश। ओके, वेरी ऑफ, केयरफुल ऑफ। आई टोल्ड यू दैट चेरी मीन्स वेरी, दैट इज केयरफुल, कॉशियस। सो डू वी से केयरफुल फॉर, केयरफुल ऑफ? ओके, चेरी ऑफ ग्रुप्स स्टॉक्स। सो दैट यस, केयरफुल ऑफ, sorry, means cautious of, not careful, cautious of groups stock, so it is not for of, कि जो ग्रुप के स्टॉक है, केयरफुल फॉर भी हो सकता है। ठीक है, केयरफुल फॉर इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन? यस करेक्ट, यू आर करेक्ट, इट विल बी चेरी ऑफ। इसको जब आप पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीजें रीड क्या करिए, यहाँ पे कुछ जगह पे होगा मल्टीपल प्रपोजिशन यूज हो सकते हैं, बट इट इज करेक्ट। क्या चीज दो बार? व्हाट इज द ने एंड ऑब्लिगेशन? ने एंड ऑब्लिगेशन मैंने बताया था, ने मीन्स बेसिकली इनफैक्ट एंड ऑब्लिगेशन। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभी आरबीआई के पास एक अपॉर्चुनिटी है, फिर बोला नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एक ऑब्लिगेशन है इनफैक्ट। So nay basically means it is an obligation, it is their moral duty to clean the year, means they should pacify all the concerns of the investors. Okay, that is the sense you are getting. चलिए next, what is tone of today's article? Tone दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा, very common tone we have today. We have got good vocabs today, guys. अच्छे vocabs हैं. Concern, yes, the tone is of concern. And suggestion, suggestion, not horrifying. Concern and suggestion. Suggestion किसके लिए है? Suggestion is for regulatory authorities that they should come forward and they should clear all the doubts. Okay, and concern is already there. Okay, so concern and suggestion, that is the tone. Okay, yes, concern and suggestion. It is not any horror movie that you are getting the tone horrifying. Okay. So concern and suggestion. So today I have not given you any phrasal verb, only 4 idioms. We have tried to use these 4 idioms in a sentence of your own. क्योंकि मिलते जुलते हैं तो try to use these 4 idioms in a sentence of your own. Okay. Horrifying is for Adani, correct Ilakya? So this entire scenario is going to be horrifying for Adani. Yes, correct. Clear everyone? So now today we will meet at 9 a.m. 9 बजे मिलते हैं, because you know we are going to discuss top 50 error detections. तो top 50 एक सेशन में नहीं होगा, 3 सेशन में, मतलब around 18-20 करके we will be discussing errors in every session. Okay, so top 50 error detections we have for basically LIC AAO, because you know बहुत सारे अच्छे अच्छे rules आपको पता चलेंगे. So error detections along with rules we are going to discuss. So do join 9 a.m. session everyone. Don't, और please editorial को continue करिए और शेयर कर दीजिए एडिटोरियल को मैक्सिमम लोगों के साथ. So like this session, subscribe to our YT channel and share this session with everyone. Okay. Lehman Brothers scam. Yes, they might be prepared. Okay. Yes. Thank you guys. Take care. I'm ending this session. Okay.